Hello dear children, and a very good morning to all of you. Now winter is almost gone and now the days are becoming longer and longer. Okay children, so now we are going to learn from day 9. We are going to learn our new lessons from day 9. So when you open your book and come here on day 9, here you have a new rhyme, that is Titli Rani. Now what is Titli? Titli is a Hindi word. Titli means butterfly, and you can see a beautiful butterfly here. And yes, we already know to draw and color it, right? So now all of you just join me and we'll sing this rhyme. तितली उड़ी बस में चढ़ी, बैठ न सकी रोने लगी। ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास, तितली ने कहा मैं चली आकाश। ये तो बहुत ही एक अच्छी सी राइम है। इट इज इन इंग्लिश, इट इज हैव अ हिंदी वर्ड्स। तो ये बहुत ही सुंदर राइम है। तितली उड़ी बस में चढ़ी, बैठ न सकी रोने लगी। ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। एंड द बटरफ्लाई जस्ट फ्लू टूवर्ड्स द स्काई। आकाश का मतलब है स्काई। ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हेन वी टर्न द पेज, you have one more worksheet page of letter S, that is you have to trace and write the letter S. So I'm just one more time going to show you the formation of S, that is the capital S, that is from red line to blue line make the C shape, and then from here again make the other half circle. Yeah, you can say that is one half circle, and then you turn and make the other half circle this way. So this is the capital S. Now when coming to the small s, you have to write it between the two blue line. So you have to be very careful while you are writing it. Okay children, now I have written many new words that starts with the letter S. जो S से start होता है, जैसे so, see, ये see का मतलब है हमें कुछ देखना है, eyes, see. ये SEAC, that is the source of water. She is the another word used for a girl. जो girl है उसको हम she कहते हैं। जैसे अगर boy है तो he and the girl है तो she. She is a pretty girl. Sky, sky क्या है? That is up, you can see. Sad, sad means when you are not happy, when you are feeling gloom. Shy, जब हमें शर्म आती है। Sand, now you all know the sand, है ना? Sand जब आप बीच पे जाते हो, you see the sand. Slow, slow is to walk slowly. Sleep, जब हम सोते हैं। Ship, ये ship है the animal. Slate, जिसमें हम लिखते हैं। Sit, sand, जब हम किसी को कुछ भेजते हैं। Season, summer, summer is another name for season. 6 is the number notation of the number 6. 7 भी S से स्टार्ट होता है। Then snow, sell, sell का मतलब है जब कुछ हम बेचते हैं। Shop, जब आप कुछ सामान लेने कहीं दुकान पे जाते हो, it is called shop. Soap, सोप का मतलब है साबुन, that you use for bathing. Soldier, you know who is the soldier, right? So still there are many more new words that you can learn, and that will just have more words in your word bank. Now here we are going to learn a new number, that is the number 28. तो अभी हम 28 लिखना सीखने वाले हैं। So 28 first you have to recognize the number. Okay, 2 and 8 makes 28. Here is the number notation of 28, that is TWENTY, 20, EIGHT 8, that is 28. Now here you are given the smiley balls that you have to count, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28. Now when you write here 28, how will you write? You have to write 8 below the O. 8 की प्लेस वैल्यू है ones. And 2 you have to write below T क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू है tens. So जब आप लिखते हो तो आपने नीचे की लाइन को टच करना है और 8 को अभी हम S के शेप में बनाएंगे. नो 2 balls है ना. अभी हमको S भी लिखना आ गया है. तो आप 8 कैसे बनाएंगे? मेक S देन टेक अ राउंड एंड गो अप. तो आप जब भी लिखते हो मेक श्योर दैट यू टच द बिलो लाइन एंड आपके सारे राइटिंग्स एक जैसे ही आने चाहिए. मेक श्योर. और अभी आपकी हैंड राइटिंग डे बाय डे अच्छी होनी चाहिए. सो यू टू कंप्लीट राइटिंग द नंबर 28. Turning on to the next page. Again you have one more page of the number 28 और एक प्रैक्टिस वर्कशीट पेज है 28 का. So children, with this we end this day 9. Bye bye. Have a nice day.